Just give me a second. Hi everyone, Ashish Kyal here. It's warm welcome to every one of you. Amazing to get you all here. This is Tuesday at 4, not Friday at 4. आज हम live जा रहे हैं. We are going to look at options. We are going to look at markets. We are going to look at how are things and how what you have to manage, how you have to manage this kind of market scenario जहां पर market 2 दिन रैली करता है फिर गिर जाता है तो ऐसे में करना क्या है वो सारी चीजें देखेंगे. And before I move on, I just want to check if you are able to see me and hear me out clearly. Josh is high. Fantastic Josh. हमेशा बढ़ा हुआ ही रहना चाहिए दोस्तों. मार्केट कोई भी डायरेक्शन में जाए. I'm just opening up my things. Glad to get you, Balbir, Raghunath, Vikas, Sham, Ankesh. Every one of you, are you audible? Am I audible to all of you? आप सुन पा रहे हैं मुझे? And people who are there on YouTube, I'm just sharing across a very quick link to all of you and checking if you are able to. Just a second. If you are able to hear me out loud and clear. जो भी YouTube पे जुड़े यहाँ पर आप देख पा रहे हैं मुझे. ओके, आई एम गोइंग टू पिन दिस मैसेज. मैंने चैट पे जूम लिंक डाल दी. यहाँ पर आप जूम पे जुड़ जाइए बिकॉज वंस यू आर देयर ऑन द जूम थिंग्स बिकम्स मच इजी. आई एम एबल टू इंटरेक्ट विथ यू एवरी time. Uh, till the time you giving levels, we sailing through. You should be able to derive levels. We are going to get there in the Brahmastra eventually, so don't worry on that. Saurabh, glad to have you also here, Sunny. Fantastic, every one of you. ओके तो चलिए अभी आगे बढ़ते हैं. आज हम क्या देखने वाले हैं कि ऑप्शंस को कौन कौन यहाँ पर ऑप्शंस ट्रेड करता है. मैं एक पोल लेना चाहता हूँ. आर यू एन ऑप्शंस ट्रेडर? बिकॉज इफ यू आर एन ऑप्शंस ट्रेडर you might be facing challenges because मार्केट का जो आईवी है, आईवी जिसे हम कहते हैं इम्प्लाइड वोलेटिलिटी, वो क्रैश होता जा रहा है. दूसरा चीज हम आज देखने वाले हैं हाउ टू कंबाइन दैट विद केएसटी विच इज अ मोमेंटम इंडिकेटर. तीसरी चीज जो हम देखने वाले हैं आज के दिन में along with that we are going to look at Gann square of 9. It's sometime that हमने Gann square of 9 को नहीं देखा है, उसके बारे में हम बात करेंगे. एक पोल बहुत ही क्विकली लॉन्च किया हुआ है मैंने. आर यू एन ऑप्शंस ट्रेडर? आई एम गेटिंग लॉट ऑफ येसेस ऑन दैट. ये पोल को मैं एंड कर रहा हूँ. बहुत सारे जन यहाँ ऑप्शंस में ट्रेड कर रहे हैं इज व्हाट आई कैन क्लियरली सी. So I'm going to go back on my daily time frame chart and we are going to look at this chart. I'm going to simply look at simple way of cycles. Uh, okay, there is Bhushan Patil. I do remember you. You have been in BMW in 2022, a full-time trader. Things have been good so far since I learned from you. Glad to know that Bhushan आपके लिए काम कर रहा है and keep sharing that feedback across so that people can keep learning across and becoming a systematic trader. So I'm just sharing my screen across to you and सारे लोग मेरी स्क्रीन देख पा रहे हैं क्या यहाँ पर? ओवरऑल पहले तो मैं ये पूछना चाहता हूं आप लोगों से, जो मॉर्निंग वीडियोस मैं डाल रहा हूँ, मॉर्निंग वीडियोस इज इट यूजफुल फॉर यू? मॉर्निंग वीडियोस नहीं, सॉरी, मॉर्निंग ट्वीट्स जो मैं डाल रहा हूँ, इज इट यूजफुल फॉर एवरी वन ऑफ यू? मॉर्निंग ट्वीट्स जो पोस्ट करता हूँ एंड शॉर्ट वीडियोस जो मैं डालते रहता हूँ, अगर आप लोगों के लिए यूजफुल है तो मुझे एक बहुत ही क्विकली थम्स अप दीजिए सो दैट आई नो these videos are useful for you all. It is helpful. Prashant Kare, Shaib, Rohan, Lalit. Okay, lovely. Or before I move on, I just want you to join the WhatsApp community also. Community link आपके साथ शेयर होगी. मैं QR कोड बहुत ही क्विकली शेयर कर देता हूँ. एक WhatsApp कम्युनिटी ज्वाइन कर लीजिए यहाँ से. एंड वंस यू ज्वाइन जस्ट लेट मी नो कि आपने यहाँ ज्वाइन करनी. देन विल मूव ऑन फर्दर. That is oxygen. Glad to know that कि oxygen के बिना survive कैसे करेंगे. So the morning tweets are like oxygen. That is what Ravi is saying. चलिए चार्ट पे आते हैं. पहली चीज, सबसे पहली चीज जो अगर आप लोग चार्ट देख रहे हैं, दिस इज टुडे इज गोइंग टू बी मोर ऑफ लर्निंग देन एप्लीकेशन. आई एम गोइंग टू टीच यू सर्टेन थिंग्स. सब कुछ हाइड कर देना. पहले मार्केट को यहां पर बहुत ही सिंपल वे से अगर मैं देखता हूं और ये पेन क्यों हो रहा है और कैसे होता है, ये सारी चीजों को मैं बताऊंगा. ब्लैंक चार्ट पे जाके देखते, काम करते. ऑलरेडी प्लॉटेड पे नहीं, मैं ब्लैंक पे दिखाता हूं आपको. ब्लैंक चार्ट पे जाएंगे. यहाँ पर निफ्टी का डेली टाइम फ्रेम है.
यहाँ पर ये सारी चीजें मैं निकाल देता हूँ आप लोगों के सामने, क्योंकि फ्रेश व्यू देखना है कि यार मार्केट में हो क्या रहा है, पैसा बन नहीं रहा है। काफी सारे जन हैं जो यहाँ पर सोच रहे होंगे यार मार्केट कर क्या रहा है, शॉर्ट टर्म में जाएंगे। यार शॉर्ट टर्म की बात करें, मीडियम टर्म तो मालूम है मदर ऑफ द बुल मार्केट है, लेकिन मजा नहीं आ रहा है। ऐसा हो रहा है क्या, मजा नहीं आ रहा है यार। मतलब एक तो पहले पोर्टफोलियो बढ़ नहीं रहा है, स्मॉल कैप स्टॉक्स में थोड़े सा कुछ होना शुरू होता है, लगता है कि यार मेरा स्टॉक्स बढ़ना चालू ही हो रहा है कि ट्रम्प भाई साहब आ जाते कुछ ना कुछ बवाल लेके। हो रहा है ऐसा कि यार जैसे ही हम कोशिश करते हैं आगे बढ़ने की, कि फिर कुछ आ गया। जैसे ही सोचा था सब कुछ स्टेबल हो रहा है, फिर धमकी आ गई, फिर टैरिफ आ गया, कुछ नहीं तो फिर से एक वॉर आ गया। मतलब यही सारी चीजें हो रही है, और मार्केट उसी चक्कर में मोमेंटम बनाने जाता ही है कि ठंडा हो जाता है। मतलब ब्रेकआउट दे ही रहा था कि ठंडा हो गया, साइडवेज हो गया। क्या करें अभी, ट्रम्प के मूड के साथ हम हमारा ट्रेडिंग को थोड़ा सा सेट करना पड़ेगा। मतलब क्या करें, वैसी हालत। पहली चीज, एक चीज ये है, बिकॉज आई एम अ वेरी एग्रेसिव ऑप्शन ट्रेडर, सो ऑप्शंस मैं देखते ही रहता हूं क्या चल रहा है, इम्प्लाइड वॉल क्या हो रहा है। मेरा जो एक वीडियो मैंने बनाया था आप लोगों के सामने कि मार्केट अगर ब्रेकआउट ऊपर की ओर देगा तो आईवी भी बढ़ेगा, आप लोगों ने वो देखा था क्या वीडियो? That video which I have talked about, that when the market is going to go up, the implied vol or VIX will also go up. And आपने देखा वो 2-3 दिन में ही जैसी मार्केट ऊपर जाने लगा विक्स बढ़ने लगा, जैसी मार्केट थोड़ा सा साइडवेज हो गया विक्स गिरने लगा। जिसने नहीं देखा तो पूछ लीजिए, मैं अभी वापस से आपको बहुत ही क्विकली एक्सप्लेन करूं। यहां पर अगर मैं ये चार्ट देख रहा हूं सिंपल से, इफ आई एम लुकिंग एट इट, ये अक्टूबर की डेट है, ये अक्टूबर की डेट है 23 अक्टूबर 2025। 23 अक्टूबर 2025 पे मार्केट इधर था, कौन से लेवल पे था, हाई कितना बनाया था इसने? इसने हाई बनाया था 26,104। मार्केट अभी कैन आई से दैट इट इज स्टिल नियर टू दैट लेवल, ऑलमोस्ट टू दैट लेवल 26,104। सो कैन आई से दैट निफ्टी आइडियली अक्टूबर से अभी तक टाइम करेक्शन में, प्राइस करेक्शन नहीं हुआ। चार्ट दिख रहा है ना आप सभी को? एवरी वन ऑफ यू आर एबल टू सी द चार्ट हियर। निफ्टी since October 2025 until now is in the mode of time correction, not price correction. Do you agree with me? Yes or no? आप सभी से पूछ रहा हूं, बराबर है। टाइम करेक्शन क्या होता है? मार्केट ऊपर जाता है नीचे जाता है, ऊपर जाता है नीचे जाता है, प्राइस रिट्रेसमेंट नहीं हो रहा है, टाइम करेक्शन हो रहा है। ठीक है, प्राइस करेक्शन इतना पेनफुल नहीं होता है दोस्तों जितना टाइम करेक्शन होता है। Why? In terms of price correction, the reaction is very fast. ऊपर गया नीचे गया, यार गिर रहा है गिर रहा है, क्या करे उतने में वापस बढ़ना चालू हो जाता है। मतलब ठीक है, मतलब मेंटली हम वो पूरा मूव देखते हैं एंड देन इट्स ओके। But when the time correction happens, people start losing patience, because when the time correction keeps happening, we keep waiting, and patience is something which is in current scenario, in the current generation, or even in the past generation, is a luxury. Patience is a luxury, patience नहीं है, और वही मार्केट टेस्ट कर, and patience is going to be rewarded. So if you are patient enough, if you trust your method, if you trust your mentor, you will be rewarded. ये बहुत इंपॉर्टेंट। अब ये सारी चीजें मैं क्यों बता रहा हूं? With this, I am going to put down one simple indicator which is known as average true range. एवरेज ट्रू रेंज, ब्रह्मास्त्र पार्टिसिपेंट्स है क्या यहाँ पे? उन्हें तो पता ही होगा, हमारे मेंटीज को पता है एवरेज ट्रू रेंज क्या होता है, बट जो बाकी लोगों को नहीं पता उन्हें मैं बता रहा हूं। एवरेज ट्रू रेंज, मैं बहुत डिटेल में नहीं जा रहा, मैं आपको बता रहा हूं ये क्या है। एटीआर इज अ प्रॉक्सी फॉर वोलेटिलिटी इंडेक्स। प्रॉक्सी का मतलब होता है, एटीआर रिप्रेजेंट्स हाउ मच इज द वोलेटिलिटी इन द मार्केट। If the market is sideways, the ATR keeps falling, which means the option value is falling. If I look at the entire momentum, the maximum momentum was here until
May 2025. Then the market entered into a sustained period of sideways action. अगर आप यहाँ पर देखेंगे, मैं चैनल के फॉर्म में आपको बताऊं, it entered into a sustained period of sideways action. This is a sideways action. Can you see that? Now, talking in terms of price, in terms of market profile. Market profile means that we are trying to profile the market. Profiling होता है ना, अगर हम generally profiling means क्या? We are just trying to understand the traits of the market. We are right now in the phase of profiling. I am teaching you profiling of the market. When I'm looking at the profiling of the market, this was the period when the size of the candles were good, the momentum was good, the euphoria was good, and then slowly the euphoria started dying out. Dying out because market went into a range. It gave breakout of the range. It again started slowly started dying out. ये मैं यहाँ पर डाल देता हूँ. Now arrow नहीं डाल के मैं line डालता हूँ आप लोग. You will just love what I'm going to show you now. You will be like super. अभी अगर मैंने ये line डाल दी यहाँ पर, which is a different line, and I'm going to put one more line here. कौन सा पैटर्न बन रहा है ये यहाँ? Not from wave theory, not from neo wave, simple price action, भाव भगवान से simple concept I am asking. पहले तो एक रेक्टेंगल पैटर्न बना, उसका ब्रेकआउट आया, उसका टारगेट भी अचीव हुआ. अभी एक कंसोलिडेशन वेज नहीं है, ये ट्रायंगल पैटर्न है. वेज यूजुअली इस तरीके से नहीं होता, थोड़ा सा ज्यादा ड्रिफ्टिंग होता है. It's like a triangle pattern. You can say it's like more like a. I'm not talking about an Elliott wave. I'm talking about simple price action pattern. This is looking more like a triangle and ascending triangle pattern. In an ascending triangle pattern, we consolidate. I'm going to put another one indicator here, which is moving average. And you know, moving average indicator should be used, parameter should be derived using time cycle. So what is our daily time cycle? I'm asking all of you. What is our daily time cycle? हमारा डेली टाइम साइकिल किसी पता है? 55 पीरियड का. 55 कैसे आया वो पूरा साइंस है, काल चक्र का. 55 पीरियड के साइकिल में अगर मुझे मूविंग एवरेज डालना है तो मैं अप्रोक्सीमेटली 14 पीरियड का मूविंग एवरेज डालूंगा. क्यों? क्योंकि हाफ है, उसका 1/4 है. यू नो, लूनार साइकिल 28 का है. तो आरएसआई का पैरामीटर किन किन लोगों को पता है कि आरएसआई पैरामीटर 14 है? आप लोग आरएसआई का 14 यूज करते हैं? 14 parameter. Are you guys using 14 parameter on RSI? You know, it's half of a lunar cycle. Lunar is 28, so the 14 works. Every indicator parameter that you are using, I'm telling you, it has to be half or 1/4 of your time cycle. Then see the magic. It's going to be killer. So right now what I have done is, I put a 14 period of moving average. 55 का 1/4, half, plus 1, science है, वो मैं नहीं जानता. Okay. Now, if I look at a moving average and I combine it along with an ATR down here, can I say that the entire market is in a range? मतलब हमने मूविंग एवरेज देखा, हमने ATR देखा, पूरा पूरा मार्केट लग नहीं रहा है कि मूविंग एवरेज और ATR नीचे है. Can I say ATR is at the lowest level that we have seen? Can I say ATR reading is at the lowest level that we have seen since when? Since here, which was December 2023, which was in December 2023. Can I say ATR is at the lowest level? एक और चीज क्या है मालूम है? दिसंबर के वक्त निफ्टी 19,000 पे था, तब जाके मूवमेंट उसका 150 पॉइंट का होता था. निफ्टी अभी 26,000 पे है, तो भी ATR का मूवमेंट खाली 150 पॉइंट, 160 पॉइंट का. Which means that the ATR reading in terms of ratio to Nifty, if I take ATR divided by Nifty ratio, this is the lowest ever historically you have seen. नहीं समझा? समझा कि नहीं भाई? मैं क्या बोलने की कोशिश कर रहा हूं. What does ATR represents? ATR represents how much Nifty is moving on an average basis in a single day.
एवरेज बेसिस एक दिन में निफ्टी 160 पॉइंट का मूवमेंट करो। जब निफ्टी 19,000 पे था तो भी एटीआर रीडिंग 160 थी। आज निफ्टी 26,000 पे, इट इज एट 26,000 एंड स्टिल निफ्टी is still at 160 ATR, which means it's the lowest ever. If I take ATR divided by Nifty किया in terms of percentage, this is the lowest ever reading, which is at the lifetime low. Which is at the lifetime low. किन किन लोगों को ये कॉन्सेप्ट समझा? एक थम्स अप तो दीजिए यार अगर समझ में आया। अभी इसका मुझे क्या करना है? क्वेश्चन दिमाग में आता है यार, ज्ञान का मैं क्या करूं? पहले ज्ञान तो देखो, उसके बाद से देखेंगे कि इसका करना क्या है। अगर ये लोएस्ट लेवल पे है, द ओनली ऑल्टरनेटिव लेफ्ट इन 2026 इज द ATR शुड गो अप। देर इज नो अदर वे इट कैन कीप फॉलिंग। There is no other way it can keep falling to this lowest after this lowest level. Which means now that you have understood about ATR, मैं assume कर रहा हूं आप लोग सब स्मार्ट हो मेरी तरह और सबको समझ में आया ये, तो ATR के बाद हम जाएंगे मूविंग एवरेज के ऊपर। नाउ दैट द मूविंग एवरेज वेंट साइडवेज हियर, थोड़ा सा मोमेंटम बन ही रहा था। कैन यू सी दैट? कैन यू सी दैट जैसे ही मोमेंटम बनना चालू हुआ, कैन यू सी दैट ATR भी ऊपर गया, मतलब वोलेटिलिटी बढ़ना चालू हुआ गाइस। जैसे ही वोलेटिलिटी बढ़ना क्यों स्टार्ट हो गया? बिकॉज प्राइसेस मूविंग एवरेज से डिविएट होने लगे। प्राइसेस मूविंग एवरेज से डिविएट हो रहे तो वोलेटिलिटी बढ़ रहा है। अब वापस प्राइसेस ट्रायंगल पैटर्न बना के मूविंग एवरेज के पास चल तो ATR गिर रहा। विच मीन्स this market, what you are seeing right now as a pain, is an opportunity for tomorrow. People who are just trying to think about पैसा नहीं बन रहा है, आप सोच ही नहीं रहे हो। मार्केट एनवायरनमेंट कंड्यूसिव नहीं है। मार्केट एनवायरनमेंट कंड्यूसिव कब होगा? जैसे ही मुझे डेली क्लोज, अब आया सही जवाब, जैसे ही मुझे डेली क्लोज 26,400 के ऊपर मिल गया, ATR एक्सपांशन शुरू। अगर ATR एक्सपांशन हो रहा है, फॉर एग्जाम्पल स्टेप्स में बता रहा हूं आपको, प्राइजेस ने 26,400 ब्रेक किया, ओके, निफ्टी इज निफ्टी ATR टू प्राइस रेशियो is at the lowest ever levels. As soon as 26,400 breaks, prices deviate from moving average, ATR expands, classic opportunity for option traders, especially buyers. Now यहां पर अगर आप देखोगे इस लेवल के ऊपर, मैं क्यों कह रहा हूं इस लेवल के ऊपर आपको क्लासिक अपॉर्चुनिटी मिलेगी? अबाउट दिस लेवल 26,400 का लेवल है। कैन समवन टेल मी, कैन समवन गेस? प्राइस एक्शन ब्रेकआउट तो है ही, 26,400 के लेवल के ऊपर वी विल गेट अ क्लासिक ATR एक्सपांशन विल स्टार्ट। यहां मैं लिख देता हूं आप लोग लिए, ATR expansion. ATR expansion will start. When I say that ATR expansion to start, it means that prices from here will start deviating back on the upside, moving away from moving average. Let me put step by step. यार मजा आता है मुझे सिखाने को, और जब आप लोग जैसे सीखते इतने एंथू तो और मजा आता है। पहला स्टेप, 26,400 के ऊपर ब्रेकआउट है। कैन आई से प्राइसेस मूव अवे फ्रॉम मूविंग एवरेज? यस और नो? अबाउट 26,400 एंड पीपल हु आर देयर ऑन यूट्यूब, जूम पे आइए ना, डायरेक्टर साहब जूम पे जूम का लिंक शेयर करिए यूट्यूब पे। अबाउट 26,400 prices move away from moving average. One. About 26,400 prices give a breakout of a triangle consolidation pattern. Second. About 26,400 the size of the candle will start increasing.
which means ATR will expand. Third, which means volatility will increase. Volatility means VIX will go up. Fourth, if VIX starts going up, ऑप्शन बायर्स के लिए अच्छा है कि खराब है, या ट्रेडर्स के लिए, इंट्राडे, स्कैल्पिंग, सबके लिए मैं पूछता हूं। विक्स अगर ऊपर जाने लगा, वोलेटिलिटी बढ़ने लगी, मूवमेंट ज्यादा आने लगा, ब्रेकआउट आ रहा है, कैन आई से इट विल बी दी ट्रेडर्स पैराडाइज। वी आर गोइंग टू एंटर इनटू दिस ट्रेडर्स पैराडाइज, and why I am saying that is on the basis of the heartbeat of the market, time cycle। मार्केट का हार्ट बीट क्या है मालूम है? प्राइस एक्शन का हार्ट बीट है टाइम साइकिल। टाइम, व्हेन यू आर बाइंग, आई एम आस्किंग यू, व्हेन यू बाय, आर यू बाइंग अलोन प्राइस और यू आर बाइंग टू साइड्स ऑफ द स्केल? टू साइड्स ऑफ द स्केल, प्राइस एंड टाइम, एक्स और वाई एक्सिस दोनों बाय कर रहे हो ना यार। आप खाली स्टॉप लो, आप खाली प्राइस थोड़ी बाय कर रहे हो, आप प्राइस और टाइम दोनों को बाय करो। सो व्हेन यू आर बाइंग प्राइस एंड टाइम बोथ, which means that unless you focus also on time, making money is going to be difficult. You have to focus on time also। रवि यहां लिख रहे सर टाइम साइकिल 222, 26 125 था और 3-5 तक 26 185, 230 का आज मैंने मॉर्निंग ट्वीट किया था। किन किन लोगों ने चेक किया? वो किन किन लोगों ने चेक किया था? ऑस्पिशियस टाइम, वहां से 60 पॉइंट्स का स्कैल्पिंग अपॉर्चुनिटी मिला यार। चल रहा है ना, ऐसे मौके में भी चल रहा है साइकिल। नाउ if time cycle, shall we move on further from your option traders? So whoever are option buyers or sellers, do not worry, अपना टाइम आएगा और जल्दी आएगा, ठीक है। ट्रम्प भाई साहब को करने दो जो कर रहा है। मार्केट भाव भगवान से, प्राइस एक्शन इज गॉड। हाँ, अभी गड़बड़ कब है वो भी देखना है। ऐसा नहीं है कि भाई एक साइड का मूव ले लिया, गड़बड़ कब है, व्यू कब चेंज होने वाला। अगर निफ्टी ने 26,000, ये जो डोजी का लो है 25,878, 25,850 अगर ब्रीच कर देता है तो गड़बड़ है, लेकिन ज्यादा दूर नहीं जाएगा। मे बी 300 पॉइंट का मूव, इट्स ओके। 300-400 पॉइंट का मूव इज व्हाट वी आर गोइंग टू गेट, बिकॉज दिस इज अगेन अ मेजर प्राइस एक्शन एरिया, मेजर प्राइस एक्शन एरिया। नाउ हाउ डज टाइम साइकिल हेल्प इन दिस काइंड ऑफ अ सिनेरियो? आई एम जस्ट गोइंग टू गो टू नाउ द कॉन्सेप्ट्स ऑफ टाइम and why I am optimistic about the markets. I'm just going to go on time। यहां पर से सारी चीजों को मैंने निकाल दी। ये मूविंग एवरेज के बदले मैं एक दूसरा इंडिकेटर डाल रहा हूं जिसे मैं कहता हूं FLD, विच इज अ ट्रू टाइम बेस्ड इंडिकेटर। ट्रू टाइम बेस्ड इंडिकेटर है FLD। FLD इज नोन एज फ्यूचर लाइन ऑफ डिमार्केशन। मैं यहां पर आपके लिए लिख देता हूं FLD, जो हम बहुत डिटेल में मेंटरशिप में करने वाले हैं। कल हमारा मेंटरशिप का सेशन है गाइस, याद रखना वेडनेसडे है। जो भी करंट बैच वाले हैं लोग, करंट बैच का मेंटरशिप सेशन हमारा डे 8 कल है, ध्यान रखना। हम एफएलडी पे बहुत ही डिटेल में जाने वाले, और टाइम साइकिल की हमारी ट्रेनिंग 31 को होने वाली है, तो वो भी ध्यान रखना आप लोग। सो आई एम जस्ट अलर्टिंग देम, ऑल ऑफ देम, जो भूल ना जाए। यहाँ पर व्हाट इज एफएलडी? एवरीथिंग इज साइक्लिकल, एवरीथिंग इज गवर्न बाय टाइम। हर चीज टाइम से चलती है। देयर इज 10 years of decennial cycle, there is 4 years of presidential cycle, there is 12 and a half years of solar cycle, there is 28 days of lunar cycle, uh, there is 8 years of kitchen cycle, there is 52 years of quadratic cycle। Do you know the superpower shifts after every 2 to 3 quadratic cycles, which means Europe was the biggest economy earlier. After 2 quantitative cycle, the power shifted to US. US have been enjoying being in the 2 quantitative cycles for being the super economy. That power shifting is going to happen to Asia. That is quantitative cycle, which is around 52 to 54 years of quantitative bigger economic cycle। हर चीज साइकिल से गवर्न होती है, एज आई मेंशन्ड, हर चीज टाइम से चलती है। एवरीथिंग इज गवर्न बाय टाइम, रिपीट होता है, पैटर्न रिपीट होता है। Do you know, if you measure it, I'm telling you, if you measure it in a year,
specific days, specific month, specific period are repetitive, which is the period last year यही समय पे इसी टाइम पे यार अच्छा मूड नहीं था, इस साल भी इसी समय पे इसी टाइम के आसपास अच्छा मूड नहीं है. That's a repeat, that's a pattern, that is Kal Chakra, which repeats. We exist on this planet because of Kal Chakra. Do you know that? Only because we are not able to break our own karma, we exist, come back, and get again entangled into the same Kal Chakra with the expectation. What is our expectation set by the Supreme Power? Is the expectation that we break that cycle and become more conscious. If we break that cycle, become more conscious, we break our patterned time behavior. If we break that patterned time behavior, we move forward as a being. Now that's what markets also does. It is patterned within a period of time. That pattern it is not able to break because it is driven subconsciously by emotions and the pattern of collective crowd. When that crowd collectively behaves in a way in a certain period of time, we call it as a seasonality. Once someone becomes conscious about it, understands seasonality, यार जनवरी से पहला क्वार्टर कैसे होता है, मई में क्या होता है, दिसंबर में क्या होता है, that is seasonality. Once someone understands it from the perspective of time, that person knows when things are changing. Because now I'm not getting driven by the forces of subconscious behavior, but I'm driven more by the time cycles, understanding it. So when you look at this time cycle, यहां पर जो लाइन मैंने लगा रखी है, which is known as an FLD line. This FLD line represents support. How is this plotted? I am not going to discuss that now. But when the intersection of FLD line happens with price, that's a very, very beautiful thing you can see. The bigger the intersection, the broader the movement that happens. Okay. Or this acts as a support. So for example, यहाँ मैंने जो line बना रखी है, this is the intersection which happened with price. We got a target. This intersection happened. We got a target. Up downside intersection happened. We got a target. Upside. So every intersection gives us the target. This is an FLD. FLD acts as a support to the price. When it goes sideways, this behaves like a major support zone, which means breaching below this is not easy. If tomorrow Nifty gaps down sharply, breaches 25,800, gadbad. That's FLD. The time cycle support. So many of my tweets will also see the time support area. This is the time support area, my ultimate line in the sand. When will I become super bearish? For not bull market bearish, because bull market में minor trends होते हैं, पता है ना आपको. When I become bearish, because when prices break below this level of 25,728, I will turn bearish because this is my time support. Why I expect a momentum breakout to happen on the upside? Momentum breakout will happen on the upside only. Why I'm expecting it? We have completed the desired 55-day cycle. We are entering. Can you see the semicircle here, guys? Are you with me? यार मैं ही खाली बोले जा रहा हूं, आप लोग समझ ही नहीं पा रहे हो. अगर ऐसा है तो मैं फिर सिखाऊंगा, मैं छोड़ूंगा नहीं आपको. दैट्स माय थिंग. कैन यू सी द semicircle डाउन हियर? तो जी सभी लोग, चैट एकदम बंद हो गया, तो मुझे समझ में नहीं आया कि मेरा नेट चला गया, किसी के चैट नहीं आ रहे, तो आई वॉज जस्ट लिटिल कंफ्यूज. So the bottom semicircle is a semicircle cycle. And now this semicircle cycle, how does it work? Thank you, Varun, for the kind words. It's interesting. The semicircle cycle represents the momentum phase of the market. So this is where the momentum should be maximum, ideally. This is ideal case scenario. Semicircle नीचे है. Momentum is maximum. Now between this, which is between 21st Jan, which is the mid area, or around, if I take an exact date, which will be 22nd Jan. We are right now in the best momentum phase. We are right now in the best momentum phase of the semicircle if you are looking at it. If you are in the best momentum phase,
Market needs to participate now on upside breakout before 22nd Jan. If we do not generate the momentum before 22nd Jan, गड़बड़ है, गड़बड़ है. So breaking out above the level of 26,400 will result into momentum expansion, and the time is right. I can go wrong, it's okay, but the time is right, which means जो भी होना है 21 जैन के पहले करना है मार्केट, उसके बाद स्लो डाउन शुरू होता है, उसके बाद टाइम सही नहीं है, तो इसके पहले प्राइस एक्शन कंफर्म. हमें प्राइस और टाइम दोनों पे ध्यान देना है. So I'm going to just again mention here, Nifty needs to break out before 22nd January. We have entered into the phase of maximum momentum as per 55 days time cycle. But price action is awaited. Okay, we have entered as per time. Price action should follow. Okay, यहाँ पर. And once price action follows, we get a classic confirmation. Once price action follows, we get a classic confirmation of breakout. Then nothing will stop it. Hey, you have seen that happening with gold. You have seen that happening with silver. You have seen that happening with metal stocks. You have seen that happening with Tata Steel. You have seen that happening with copper, aluminum. Look at those momentum areas. Those all began from time. Everything began from time. And look at the momentum. तो यहां पर वो मोमेंटम बनने वाला है, लग तो रहा है, लेकिन ध्यान रखना होगा प्राइस एक्शन 100% नहीं होता. देयर इज नो गारंटी. मेंटेन स्टॉप लॉस बहुत जरूरी है. सो आई एम जस्ट गोइंग टू राइट इट डाउन हियर आप लोगों के लिए. यहां पर मैं लिख देता हूं. So the area of maximum. So this is the date which I mentioned, 21st, 22nd of Jan. ठीक है. This is the area where we need to have the maximum momentum. This area we need to have max momentum zone. Now these are all signs, but human behavior, we all know how it can go, so we need to be careful. That's why the stop loss. Clear है ना? Every one of you making sense? Gann square of 9 पे चले गए. बहुत टाइम से हमने Gann की बात नहीं की. Shall we visit Gann square of 9 and try and see what does it mean, how to look at it? आप लोग टाइम है क्या? You know कितना टाइम हो गया? 35 minutes have gone. Did you even realize? In a good mood, time flies. When in a bad mood, time doesn't move. That's how it happens. That's the beauty of time. So always stay in a good mood. Life will be gone. पता ही नहीं चलेगा. And you will be like, wow, हो भी गया खत्म. शुरुआत की थी कहां से कहां पहुंच गए, खत्म भी हो गया. That's how life is. तो चलिए गैन स्क्वायर ऑफ 9 पे जाते हैं. गैन का 26,002 का आंकड़ा ब्रेक नहीं कर पा रहे मार्केट यार. देखते हैं गैन के बारे में. बहुत समय से नहीं देखा. लेट अस जस्ट लुक एट गैन. दीज आर ऑल सीक्रेट साइंस आई एम शोइंग यू राइट नाउ, which I have learned, put lot of hard work to see these, to learn these, to practice it, to derive it. बहुत सारी चीजें की है दोस्तों, and I am giving it to you just out of passion. I'm just passionate trader. I'm a passionate mentor. I love teaching. I'm giving out to you everything that I know. These levels of gain can also be derived by a formula. सिंपल सा फॉर्मूला है. ये लेवल्स उससे भी डिराइव हो जाते हैं. स्क्वायर की पूरी की जरूरत नहीं. मेरा चार्ट दिख रहा है गेन स्क्वायर ऑफ 9 का आप लोगों को? Okay, if you're able to see this Gann square of 9 chart, are you able to see this chart? Okay, I have plotted this chart. These are नहीं दिख रहा है. Weird है. एक सेकंड रुकिए, मैं शेयर करता हूँ मेरी स्क्रीन. अच्छा ये दूसरे स्क्रीन पे था. ओके अभी दिख रहा है. ओके लवली. सो Gann square of 9 का चार्ट आप अगर आप देख रहे हैं यहाँ पर, what is this chart and why this Gann? What is this? This is a sacred science. This sacred science is about by W.D. Gann.
and he came out with something, a concept which is known as Gann square of 9. W.D. Gann was a wonderful person, invented a lot of things, looked at markets like a pyramid from the top. It looks like a pyramid. If you look at his workings, I've done a lot of research on that also. It's like a pyramid. If you look at from the top, and everything boils down like a pyramid. And the square of Gann is in such a way that it moves in this format. So there is a Gann square of 9. The square of 9 is plotted in this format. This format, if you look at it from an aerial view, it's a pyramid with these at the sides. It's a pyramid. From the top view, if you see pyramid from the top, this is how it looks like. And that's how he went across deriving the square of 9. From the square of 9, there are certain angles which are very, very crucial angles, very important angles, certain angles which are important. We need to figure out market कौन से angle को respect कर रहा है. Is it 45 degree? Is it 180 degree? Is it 90 degree? कौन से angle को respect कर रहा है? Basis of that respect to that angle, we come to a conclusion. These levels can act as a support or resistance or magnet. These are the options. 24/7/28 का लेवल याद है आप लोगों को? 24/7/28 was the most magnetic level, the strongest of the level that you might have witnessed in Gann. 24/7/28. These are the red line. This level was the strongest. This is the mean of all the Gann levels. जितने बार आया वहां अटक गया था, जितने बार आया. This is the biggest consolidation, not only here, even if you go and check the past. This is the biggest area ever of consolidation within the Gann square of 9. Okay. Similarly, after this biggest 24/7/28, 25/361, the next level acted as a good support and resistance, not acting like a magnet. It was not acting like a magnet, it acted as a classic support resistance. So this was resistance, this was support, super. The next level that we are into right now is 26,002. This level is again acting as a very, very powerful magnetic zone. I doubt it is going to be as powerful as 24/7/28. It is still a powerful magnet which is keeping and pulling the prices again and again. Now, how do we know beforehand that this level is going to be a magnetic level or it's going to be breached? It has to be looked combined with time cycle. Then you can still forecast it. Nifty at Gann level of 26,002 acting as a strong magnet again. Okay. This love affair of prices with Gann square of 9, Gann square of 9 level with 26,002 should break soon, and we should surpass 26,651 levels. क्योंकि बार बार मैग्नेट की तरह नहीं एक्ट करता. It acted as a magnet here. 25,361 easily breached. 26,002 is again it's like a coil. It's compressing. When it breaks, it just goes beyond 26,651. So यहां पर अगर आप देखेंगे, यहां पर 26,651 is the not अगला पड़ाव. The अगला पड़ाव is beyond 26,651. So this is Gann square of 9. And I think we are headed there and much higher from those levels. Looks like, क्योंकि confluence है. We have a price time confluence. Confluence और inflection मतलब क्या होता है? ये सब jargons technical analysis में लोग use करते हैं. Confluence and inflection areas are the zones where we expect maximum evidences. So when
मर्डर मिस्ट्री सॉल्व करने के लिए मैक्सिमम एविडेंस कलेक्ट करना है, वैसे ही मार्केट के लिए मैक्सिमम एविडेंसेस, we have maximum evidences around here. So this is going to be looking at it. So what I do is I look at wave patterns, I combine with time, I look at Gann, I collect evidences from each of my learnings that I have from my research. And then I bet on the market, looking at options or looking at futures or looking at stocks and try to gauge that. So this is what I do. And this is what I think you should do. It works for me. If it works for me, it will work for you. Are you with me? Guys, I'm asking you. आज का सेशन कुछ ज्यादा ही ज्ञान हो गया आप लोगों के लिए कि सीखने मिला? अगर ऐसा सीखने मिला है तो आई विल कीप डूइंग दैट. खाली सोचिए. आई एम आस्किंग यू ऑल, if this half an hour 45 minutes you are learning so much, यहाँ पर I can see Ankesh कह रहे हैं, अरुण, do you want me to be as a mentor for lifetime? Do you want me to be? I can't. Anil Bar keh rahe, sir, please continue. Keep on going. I can continue for the entire evening and you might just miss out your lunch. I can just keep doing that. I need to save my throat for tomorrow. Our mentorship session है for 3 hours. I have to speak there. Every session I learn something new. Thank you. Glad to know that. So such confidence we need for trade. Confidence with clarity is important. Confidence, खाली confidence होके फायदा नहीं है. Confidence with clarity. So that where do I go wrong? Where do I place stop loss? Where it's fine. If it doesn't go, if tomorrow market crashes, it's okay. I went wrong, it's okay. That clarity is required. What level? Basis of what science? That's important. So I'm going to ask you all, are you there? How many of you are there for my Brahmastra session, which is not ongoing, but the next Brahmastra session, which is going to start with Kyal Chakra on 31st and 1st. First को शायद बजट है कह रहे, लेकिन I doubt it's going to shift. अगर होगा तो ठीक है, और भी अच्छा है हमारे लिए. So I'm just going to pick up a very quick poll. Brahmastra Path to Financial Freedom. I'm taking this poll and you can also register for Brahmastra session, guys. If you're liking this, I glued onto the screen. Time just flew away. श्रीधर आप हो, आपसे आज ही WhatsApp पे बात हो रही थी. You are awesome. Thank you very much. मोहन, आप काल चक्र में ब्रह्मास्त्र में आइए. ब्रह्मास्त्र में अगर आप आएंगे, you will love it. What we do is this science of practice, doing it continued. After 3 months also we will have those session. First Feb is Sunday. Yes, so काल चक्र हमारा Saturday Sunday होने वाला है. Don't worry about it, Ankesh. कहते हैं ना, universe conspires. Will happen. You just have to believe into it. It will happen for you if it works for me. You can also register and block your seat for Brahmastra paying a 10K token. A poll ongoing है, poll में register करिए if you are wanting this Brahmastra session. You want to be with me and you can register on the link. YouTube पे भी director साहब link share कर दीजिए सभी के साथ में. I'm just going to go and show you across how can you be a part of this learning that is there. So you can be a part of Brahmastra. What all things you learn? We have mentorship sessions day 1 to day 9, which happens where I don't teach. I see. आप खुद प्लॉट कर रहे हो, आप खुद करोगे और मैं आपको करेक्ट करूंगा. हैंड होल्डिंग उसे ही कहते हैं ना, कि खुद करेक्ट करूंगा मैं आपको. जो जो आप कर रहे हो आपने सही किया नहीं, आपने क्या सीखा, आप ऑप्शंस में क्या किया. एंड वी आर गोइंग टू डू इट ऑन हिस्टोरिकल चार्ट्स. आई एम रिपीटिंग दैट, क्योंकि हिस्टोरिकल चार्ट पे हम देखेंगे दिस इज लर्निंग, दिस इज एजुकेशन. आई एम नॉट गोइंग टू एडवाइज यू टू बाय और सेल, मेकिंग इट वेरी क्लियर. आई एम नॉट गोइंग टू टेल यू कल जाके बाय करना है, कल जाके सेल करना है. नहीं, आई वॉन्ट टू एम्पावर यू. I want to give what I know that I have learned over the period of so many years in this Brahmastra program. This program is going to be for 3 months, but 3 months बोलने की बात है, it extends more. Current वाला तो 5 महीने से चल रहा है. And इसके बाद there will be exclusive sessions which I am going to keep happening with our participants also. So वो सारी चीज करेंगे. You learn about options, you learn about wave theory, you learn about time cycles, you learn about whatever I am teaching you right now. I'm not teaching, I'm just showing you the application. I will teach you about it. So वो मैं करूंगा. KST के बारे में रह गया, मैं KST पे आता हूं. आप लोगों के यहाँ पे, लेकिन KST is known as a no sure thing indicator. KST is known as a no sure thing indicator, which is derived out of time
साइकिल। सो ये जो काल चक्र का सेशन हमारा होने वाला है दोस्तों, वो केएसटी इसके अंदर हम करने वाले हैं। सो वी विल बी लर्निंग अबाउट केएसटी, वी विल बी लर्निंग अबाउट प्रिंग स्पेशल के। केएसटी इंडिकेटर इज अ टाइम इंडिकेटर। आज एक्चुअली हमारा फोकस टाइम साइकिल गैन पे हो गया, इसलिए केएसटी थोड़ा सा स्किप हो गया, लेकिन दिस इज गोइंग टू बी अ अमेजिंग लर्निंग। प्रिंग स्पेशल करके एक इंडिकेटर है, उसके साथ साइकिल डिराइव कर पाएंगे हम। प्लस वी आर ऑल्सो गोइंग टू लुक एट इन दिस काल चक्र लूनार साइकिल, कैसे उसे यूज करना है, या लूनार साइकिल का हो क्या रहा है, गेन से कैसे फोरकास्ट करना है, स्टॉक्स के ऊपर गेन लेवल्स कैसे डिराइव करना है, एफएलडी से प्राइस टारगेट कैसे डिराइव करना है। मतलब सोचिए, इफ समवन टोल्ड यू लुकिंग एट टाइम साइकिल यू कैन डिराइव प्राइस फोरकास्ट, सोचने वाली बात है। ओके, श्योर अंकेश, वो पूरा डिराइव करेंगे। प्लस इसके साथ में फॉर 3 months यू गेट एक्सेस टू निफ्टी बैंक निफ्टी रिसर्च विच इज अ पार्ट ऑफ रिसर्च, इसलिए आपको वो अलग से 251 ब्रह्मास्त्र मेंबरशिप, जो मैं कह रहा हूं ब्रह्मास्त्र रिसर्च कम्युनिटी जो मैं कह रहा हूं, वो आप ज्वाइन कर सकते हो। यू विल बी हैविंग एक्सेस टू 20 बोनस वीडियोस ऑल्सो। यू विल बी लर्निंग अबाउट दिस थिंग्स, प्लस along with that you will be also getting access to Elliott wave, master of technical analysis, लाइव सेशंस हमारा सूत्रा वेव्स और ऑप्शंस मंत्रा गो, ये सारी चीजें ब्रह्मास्त्र में होती है। मतलब इफ यू आर अ पार्ट ऑफ ब्रह्मास्त्र, यू आर अ पार्ट ऑफ मेंटरशिप, यू आर अ पार्ट ऑफ टाइम साइकिल जिसे काल चक्र कहते हैं, ऑप्शंस, यू लर्न अबाउट ऑप्शंस। मे बी यू डोंट वांट टू ट्रेड ऑप्शंस, बट ऑप्शंस डेटा इंपॉर्टेंट है यार, उसको देखना ही बहुत जरूरी होता है। You can do that, and you can also be a part of this premium time traders community. हम जो लोग people who are trading time are known as hashtag time traders. You know, they can be a part of it, and you can also pay a 10K block your seat, because जो हमारा अर्ली बर्ड है वो खत्म हो रहा है 10th of Jan को। अपनी सीट ब्लॉक करिए। The pricing offer is only because you are here with me on the session. I'm telling this about over here. There is a question here, sir. Can I pay in EMI also? Yes, you can pay in EMI. You can simply go on. Link will be shared across by my colleague, and they will help you out with the details. Uh, is there any deal for AK indicator? Nahi. That's not the deal right now. AK indicator is off the table. We are giving it only with Brahmastra mentorship participants को ही फिलहाल हम वो AK indicator दे रहे हैं। कोई भी डील नहीं दे रहे। AK indicator आपको फ्री दे रहे ब्रह्मास्त्र के साथ 3 महीने के लिए। Otherwise, we are not giving it to you. So, Rahul, your bad luck. Be a part of Brahmastra is what I would say. Uh, can you plan to teach about time cycle in Brahmastra? Yeah, Brahmastra mein time cycle is a part of it. Of course, it's a part of it. Definitely, it's a part of it. Sir, I want to also learn how you select stocks in Khiladi #1 show. करेंगे ना, जैसे अभी खिलाड़ी #1 शो ऑन गोइंग है CNBC आवाज पे। स्टॉक सिलेक्शन एल्गो जो है वो हम बनाएंगे ब्रह्मास्त्र के अंदर, जहां पर एक क्लियरली कैसे हमें टारगेट डिराइव करना है, कैसे स्टॉप लॉस डिराइव करना है, स्टॉक्स को कैसे पिकअप करना है। ऐसे मार्केट में भी स्टॉक्स है यार, जबरदस्त चल रहे हैं। अगर आप जाके देखो, टाटा स्टील को चेक करो, नेल्को को चेक करो, कितने सारे स्टॉक्स ऐसे जिसमें अभी भी मोमेंटम है, बहुत सारे स्टॉक्स। सो अगर निफ्टी इंडेक्स पे कुछ नहीं कर पा रहे तो स्टॉक्स पे तो बहुत कुछ करने को है, क्योंकि ये बुल मार्केट है। स्टॉक्स तो तेजी दिखा रहे हैं, आपको उस पर फोकस करना है। ओके, देयर इज अनदर क्वेरी हियर, सर आई have registered for Brahmastra, made the 10K token. Can you confirm? Absolutely, Ravikant, आपका रजिस्ट्रेशन हो गया. My team will confirm back to you. वैष्णवी, आपका रजिस्ट्रेशन हो गया. Fantastic, glad to get you also onboarded for Brahmastra session. जो रजिस्टर करते जा रहे हैं, एक कंफर्मेशन डालते जाइए. I want to know who all are part of Brahmastra and who all are joining, so that I'm aware about it. There is another question here. Just a second. I'm picking up the questions. There are many questions which are coming up. Sir, I am a fresher. Can I be a part of Brahmastra? बिल्कुल. So you can be a part of Brahmastra. You'll be going through some videos. करना क्या आपको? जो होमवर्क मैं दे रहा हूँ वो आपको करना है। अगर मैं कोई प्रोसेस सेट कर रहा हूँ वो आपको फॉलो करना है, डिसिप्लिन अप्रोच से करना है। आई विल बी द टॉर्च बेरर, बट यू हैव टू डू इट इन डिसिप्लिन फैशन। बहुत इंपॉर्टेंट है। ब्रह्मास्त्र सेशन की टाइमिंग क्या होगी सौरभ? दिस टाइमिंग इज गोइंग टू बी इवनिंग 7 to 10, जो मेंटरशिप सेशन हमारा होगा इसके अंदर। प्लस देयर विल बी वीकेंड ट्रेनिंग्स विच विल बी 10 to 4, नॉट ऑल वीकेंड्स।
मंथ में एक बार एक वीकेंड की ट्रेनिंग होगी, उसका पूरा स्केड्यूल कैलेंडर बनाया हुआ है एंड माय टीम विल कंफर्म विद दैट। ओम प्रकाश आपका पेमेंट आ चुका है, एक बार कंफर्मेशन कर दीजिए। सत्यश्री आपका 10K टोकन आ चुका है। डायरेक्टर साहब ओम प्रकाश का एक बार कंफर्मेशन कर दीजिए। निफ्टी एक्सपायरी कॉन्टेस्ट एंड इट वाज रवि हमारे ब्रह्मास्त्र के पार्टिसिपेंट है, रवि केडल। Pardon me if my second name that I'm calling out is not proper. For the first time, he's writing on the chat. For the first time, I attempted Nifty expiry contest and it was bang on. Glad to know that आपका नाम नहीं था रवि। आपने वो जो हमारा ट्रेडर्स कम्युनिटी है जहां पर पार्टिसिपेट करना था वहां पर डाला था क्या? वो इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर आपने ट्वीट पे डाला होगा तो वो कंसिडरेशन में नहीं आएगा। आई विल चेक विथ माय टीम। डायरेक्टर साहब प्लीज नोट करिए रवि का जो फोरकास्ट था वो क्या लेवल था, और वो विद इन 12 PM के पहले अगर आया था, सो रवि शुड गेट द क्रेडिट फॉर दैट। डू नॉट वरी, आई विल पर्सनली इंश्योर। एक कंफर्मेशन डालिए डायरेक्टर साहब यहाँ पर आप उनका नाम ईमेल आईडी से चेक करिए एंड मेक अ नोट। ये हमारे ब्रह्मी है और उन्होंने इतना जबरदस्त फोरकास्ट किया फॉर द फर्स्ट टाइम। ही से he should be rewarded for that. He should be credited for that. I'm going to check that. In case आपका वहां पर नहीं होगा या कुछ होगा, टीम विल कॉल एंड चेक एंड विल रिस्पॉन्ड। ओके फैंटास्टिक। आई कैन सी जो जो यहाँ पर अभी है क्वेश्चन आ रहा है। पुनीत का क्वेश्चन है, डो नॉट वरी पुनीत। देखिए पहले सीखना है। फॉर एग्जाम्पल 2008 में आई वॉज वर्किंग विथ लीमन ब्रदर्स, आई लॉस्ट माई जॉब बट आई डिड नॉट गिव अप। आई डिड CMT लेवल्स, ऑल 3 levels in 1 year, and then the journey never stopped. I think that was the good thing that happened. जॉब चली गई तो ऑप्शन ही नहीं था। So Nomura I joined, still worked for there. I was in US, I was in UK. I wrote a book in case you are not aware. But I learned always. Even now I'm learning because learning should never stop. Market keeps teaching you so many things every single day. And टाइम निकलते जाएगा। जो हम कहते हैं ना, कहावत है, जो कल करे सो आज करे सो अब। आगे का मुझे याद नहीं आ रहा, लेकिन वो बहुत इंपॉर्टेंट है। That's what time is just ticking away for every one of us in the same pace. In the same pace. The only thing is, how do we manage it? We can only manage ourselves, not time. So कहते हैं ना, टाइम मैनेज करना है। यार आप टाइम को कैसे मैनेज करोगे जो आपके हाथ में ही नहीं? The only thing is what we can do is manage ourselves and make us more conducive to what we want to do in life, and do that. It's very important. There is another question here, sir. Time just flew away. Thank you very much. भाव भगवान छे, एब्सोल्युटली इट्स वंडरफुल। जो जो लोग यहाँ पर अभी पेंडिंग है, जिनका रजिस्ट्रेशन नहीं हुआ है, कंफर्मेशन डालते जाइए। अजय, अमर, अमित, अनिल, आप लोग रजिस्ट्रेशन अगर कर दिए तो एक कंफर्मेशन डाल दीजिए सो दैट माय टीम कैन चेक। दिलीप, गोविंद, हार्दिक, हितेश, जय, ओम आपका हो गया क्या? फिर ओम प्रकाश आपका टोकन हो गया, एक कंफर्मेशन डाल दीजिए। डायरेक्टर साहब उनका नंबर ले लीजिए। कुमार, कृपा, फैंटास्टिक। आई ग्लैड टू आल्सो सी यू हियर। विपुल आपका भी रजिस्ट्रेशन हो चुका है, लवली। नीरव पटेल आप भी हो यहाँ पे, क्या बात है। नीतीश पाठक, यू डोंट मिस एनीथिंग। भाई नीतीश भी हमारे ब्रह्मास्त्र पार्टिसिपेंट है ऑलरेडी। और जो जो जुड़ते जा रहे, प्रकाश, प्रवीण, आप लोग का रजिस्ट्रेशन हो गया तो कंफर्मेशन डाल दीजिए मुझे। राजीव, रमेश, सचिन, सददीप, सेजल, आपको मैंने लास्ट सैटरडे भी देखा था मास्टर क्लास में, आप भी हो यहाँ पे। शैलेश, फैंटास्टिक, सुंदर, लवली, तिलक, उज्जवल। सो योगेश, इट्स ऑलवेज लवली टू हैव यू ऑल हियर। आप लोग रुकिए, जुड़ते जाइए फटाफट से। What is the system of EMI? How many numbers of installments have to be paid? EMI डायरेक्टली आपके कार्ड पे मिल जाएगा। अगर इफ यू हैव क्रेडिट कार्ड्स देन यू कैन डायरेक्टली ऑप्ट फॉर एन EMI। EMI की लिंक शेयर कर दीजिए सभी के साथ में। आई एम नॉट श्योर, एक बार कीमत के साथ फिर से शेयर कर दीजिए। सो basis of the card you can directly opt for EMI options and it can be 12 months and it can be as low as 5,000 per month EMI. What's your eligibility? You need to check that. Basis of that वो आप कर सकते हो। हिम्मत, खाली ये सोचना है। देखिए आपको सोचना एक ही चीज है, अब तक जो मैंने किया है और क्या मैं अगर ये करता हूं, इज इट गोइंग टू मेक अ डिफरेंस इन माई लाइफ? दैट्स द डिसीजन यू हैव टू टेक।
If you think it's going to make a difference in your life and what you want to achieve, you need to take the plunge. If you think यार नहीं, शायद मैं तो ऐसा ही हूं, मैं तो नहीं कर पाऊंगा, मेरे से तो नहीं हो पाएगा, मैं तो डिसिप्लिन नहीं बन पाऊंगा, तो आपके लिए है भी नहीं। अगर आप वो कमिटमेंट नहीं दे सकते हो मुझे कि आप डिसिप्लिन्ड बन पाओगे या आप होमवर्क करोगे, अगर आप वो कमिटमेंट दोगे मुझे, तो ही आप कर पाओगे। कमिटमेंट क्या चाहिए? जो मैं कह रहा हूं वो करना है। जैसे सीखना है डिसिप्लिन वे से स्टॉप लॉस लगाना है, नुकसान हो रहा है छोटा करना है, पैसा बन रहा है ज्यादा कमाना है। ये बहुत ज्यादा जरूरी है, बहुत ज्यादा। सुनील, ये लाइव सेशन होगा, मेंटरशिप में हमारा लाइव सेशन होने वाला है। ओके हेमंत, आपका नंबर भी ड्रॉप कर दीजिए, आपकी ईएमआई लिंक हेमंत को दे दीजिए। डायरेक्टर साहब प्लीज गिव हिम ईएमआई लिंक सो दैट ही कैन डायरेक्टली रजिस्टर फॉर इट। लाइव सेशन, ये ब्रह्मास्त्र में लाइव सेशन ही है हमारे, जो हम बात कर रहे हैं सारे लाइव सेशंस होंगे। और जल्दी रजिस्टर करने से बेनिफिट क्या है? आप काल चक्र ये टाइम भी अटेंड करोगे, आप काल चक्र नेक्स्ट टाइम वापस अटेंड करोगे, सो यू विल लर्न अबाउट इट ट्वाइस। सो इट्स लाइव सेशन बट वी लुक एट हिस्टोरिकल चार्ट, कीप दैट इन माइंड। ओके, fantastic. There is another question here. Sir, I am already using Elliott wave, but I want to build up on time cycle. Shall I go for Brahmastra or Kalchakra? See, Brahmastra is not about, it's not a course. Brahmastra is mentorship, where you do, I check and I correct you. I tweak. Again, you do, I check, I correct, I tweak. I keep doing that and you keep improving. You keep following the system. That's how we follow it. So even if you know it, if you want to learn time cycle, you can be in Brahmastra. लेकिन अगर आपको कॉन्फिडेंस है खुद पे कि मुझे सीखने के बाद मैं खुद से डिसिप्लिन हो जाऊंगा, मुझे जरूरत नहीं पड़ेगी किसी को पूछने की, then you can be a Kal Chakra, part of Kal Chakra. You learn about time cycles, you learn about Gann, you learn about FLD, you learn about Pring Special Key, you learn about all of these things. So you can be a part of that also. Super. Awesome. So I think I've answered a lot of questions. A lot of people are still joining in. Poll मेरा ongoing है, so be a part of it. जाते जाते दोस्तों, very quickly before I forget, a quick disclaimer, guys. This is what you have to ensure. We are SEBI registered research analyst. Whatever I am doing here is purely learning perspective. Investment in market is risky. There is no way guarantee. Please remember that. And this is the registration detail and the disclosure. So keep that in mind. It was wonderful speaking to you today. 1 घंटा हो गया, पता भी नहीं चला हमें कि इतना कुछ आज अगर आपने सीखा है तो नीचे कमेंट पे डालिए, जिससे मुझे भी पता चले आपने आज कुछ ना कुछ नया बिल्कुल सीखा है। ये बहुत जरूरी है मेरे लिए जानना। एंड इफ यू आर वॉचिंग दिस ऑन यूट्यूब, डू सब्सक्राइब टू द चैनल, इट्स गोइंग टू बी लवली। एंड कल हमारा सेशन है ब्रह्मास्त्र वाले एग्जिस्टिंग बैच का, डू नॉट फॉरगेट टू ज्वाइन। एंड जस्ट कीपिंग यू अवेयर, वी आर गोइंग टू लुक एट साइकिल्स, वी आर गोइंग टू लुक एट एफएलडीज, वी आर गोइंग टू लुक एट केएसटी की शुरुआत करेंगे, सारी चीजों की शुरुआत करेंगे। आपके कमेंट्स और ये सारी चीजें ट्रेडर्स कम्युनिटी पे आ रहे हैं हमारे ब्रह्मास्त्र वालों के, वो तो है ही, बट ये सारी चीजें भी ऑन होंगे। फैंटास्टिक। आनंद राज का एक और क्वेश्चन है, सर आई एम बिगनर सो कैन आई टेक ब्रह्मास्त्र? बिल्कुल आनंद राज, डायरेक्टर साहब इन्हें हेल्प कर दीजिए। यू कैन टेक ब्रह्मास्त्र, ऑफ कोर्स आप ले सकते हैं। एंड एज आई सेड, आपका जो प्रिपरेशन है वो अभी से ही शुरू होगा। आई विल गाइड यू हाउ यू हैव टू गो अबाउट इट, कौन से वीडियोस धीरे धीरे देखना है, ज्यादा मेहनत नहीं करनी है, स्मार्ट वर्क करना है, डिसिप्लिन बनना है। स्मार्ट वर्क इज व्हाट इज रिक्वायर्ड इन द करेंट एआई टाइम्स, नॉट हार्ड वर्क। हार्ड वर्क तो मैंने बहुत किया है, स्मार्ट वर्क करना इंपॉर्टेंट होता है। तो आप बिल्कुल कर सकते हो। आप 10 के टोकन पे करके यू कैन रजिस्टर एंड ब्लॉक योर सीट। ऑप्शंस ट्रेडिंग गाइडेंस, आई विल टीच यू हाउ टू ट्रेड इन ऑप्शंस इन टर्म्स ऑफ कौन सा स्ट्राइक सिलेक्ट करना है, कैसे देखना है, कौन सी स्ट्रैटेजी ऐसे लो आईवी में काम करेगी, लो एटीआर है कैसे काम करेगी। यू विल बी अ पार्ट ऑफ दैट ऑल्सो। श्योर सुनील, आपका नंबर ड्रॉप कर दीजिए। डायरेक्टर साहब सुनील और आनंद का डिटेल्स ले लीजिए। माय टीम विल कॉल यू एंड एक्सप्लेन यू द प्रोसेस एंड द मेथड, डोंट वरी अबाउट इट। ओके, बिल्कुल। ऑसम गाइस,
Lovely. It was wonderful speaking with you all today. Enjoyed. Have a wonderful time. मिलेंगे जल्द and become a wonderful trader. Ashish Kyal signing off.